Test mic testing.
Test. Requesting both the captains to come for the toss. Both the captains are here. Mohit, the captain of Union Sports Club Marcel, and METAFURN charges captain Sunil Rathod with the two official umpires, Santosh Goenkar and Prashant Gadekar, for the toss ceremony for the fourth day first match. Mohit has taken the coin, and I think he's going to spin, and Sunil Rathod is going to call. Here goes the coin. Tails says Sunil, and tails it is Sunil. The toss is with you. What is your take? We are going to ball first. Definitely winning, and maybe that is one motivational way to just take your decision to choose. We are batting side is very much strong, so we are capable to chase the whatever score opposite team will do. How is the balance in the team? Yeah, all balanced team is okay because today is our Siddesh is not available, but we are fair enough to chase the score. All the best for you, Sunil. Mohit, bat first, as what we have seen is your team has the momentum, and with one win, you're going to carry that confidence in this. Yeah. So we'll try to score a good total so we can restrict them. All the best for you. Is right from the center of the ground for the first match of fourth day. METAFURN charges captain Sunil Rathod won the toss, and they are bowling first.
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को
So 2 wickets down, batting first, Union Sports Club Marseille. Shaker getting a breakthrough of the prize wicket of Felix Dice, and the captain Mohit Tari takes his guard, marking his line, will be ready to face Shaker. That was an excellent decision from Santosh Govingar. He shuffled across and the pad coming right in front of the middle stump, giving a clear view to the official umpire Santosh Govingar to lift his finger towards the skywards. Watchfully played, and yes, it's a call. Could be a comfortable single here. Gets off the mark. The very first delivery, Mohit Tari, the captain. This is the second over which is in progress, and as far as Union Sports Club Marseille is considered, I would like to just mention that it is a team which is capable of recovering from any situation. Completion of 2 overs, score is 5 for 2. Wicket once again on the bowling mark. On strike is the captain. Once again the full face of the bat which comes into play. The intention is to just lie low for some time, just look for singles and twos and form a partnership. A partnership, as I always say, once again will be very handy here for team to recover from the damage of 2 wickets early on. The very first wicket in the very first over and the second wicket in the second over of Felix Dice. Thick edge, the ball running down deep third main region, finds a fielder. And METAFURN charges the house of furnitures. Over. Oh, that could have been a catch. A thick edge dive from the wicket keeper, but could not grab the opportunity. Shekhar Bethodkar once again with a beautiful spell. The very first delivery completely taken the batsman by surprise, and that too slightly in the leg side. That was a regular catch for the wicket keepers, not difficult for them. What an opportunity going begging. And after the first winning streak, Union Sports Club Marseille have the momentum as well as the source of inspiration as they're taking on METAFURN charges in this first match of the day. However, Sunil Rathod, the captain of METAFURN charges, won the toss and opted to bowl first, as he says they would like to chase as they've got good batters in their side. Gentle push with the once again the full bat which comes into play. Oh, the ball was up and it will race away to the fence.
Much needed boundary which comes up now for Union Sports Club of Marseille with this beautiful angling it. A slightly uppish though. And that's the beauty of the power play. Overs anything in the gap or the ball beats the short fielder, will race away to the fence. Good drive, straight to mid-off. Finds the fielder. That should be no run. Welcome to the beautiful ground of Madkai Panchayat. And what a view from where I am sitting to comment. Absolutely wonderful view from here. Slightly angling it with the thick edge, the ball going straight in the deep gully region. Short gully region to be precise. It looks like the ground of Dharmashala, which is the most beautiful ground in India. There are a couple of grounds in Goa which are located on a hilltop. One is definitely Madkai Panchayat ground. And with a lovely view, you can see the surroundings, greenery in the mountains, as well as the ground at Durbhat, which is Dr. Ramani ground, is also quite beautiful. And the 4 overs, it's 14 for 2 wickets down. So 4 overs gone by, it's 14 runs. Still there is a control over the runs and picked up 2 wickets. I think trying to just recover from that damage and rectification from the captain as well as the new batsman who has just joined in is Parish Gaonkar and Mohit Tari. Thick edge, the ball once again run down to the deep third man region, finds a single for the batters. Trying to reconstruct, rebuild the inning after the fall of the very first wicket of Saish Gaonkar, and then Felix Dice was plumb. Wanted to just shuffle across and play in the square leg region. A slight deviation there and a wide signal to official umpires who are very professional and especially hot favorite when it comes to Sakli Municipal Ground. Santosh Goenka, just 7 kilometers from him, the distance of Sakli Municipal Ground, and for Prashant Gadekar, it's a quite a distance, almost 30 kilometers approximately from Aldona to Sakli. Much better line this time from Vikesh. The bowlers are doing a job here right from the beginning. It's a good toss to win for METAFURN Charges. And quickly, without any hesitation, Sunil Rathod says they are going to bowl first. Swing and a miss this time, and this time once again a stretch of arms like Shah Rukh Khan. Wide signal. Prashant Gadekar
He's got that fair complexion, and that's the reason why other officials are calling him Park Long. And very professional, and ऐसे he ही और knows भी exactly वीडियोस how के to लिए take चैनल care को of the सब्सक्राइब करो और the बेल tense आइकन को दबाना situation बिल्कुल of मत the match. भूलिए। ऐसे ही A good hit, but not good enough to get some runs. Played straight to the mid-on region where Sahil Gowns is deployed. He's been regarded as the Brian Lara left-hand batting sensation of METAFURN charges. He's still to make a mark for himself, as today is going to be a good opportunity for him. Quick delivery for a dot ball. Once again, a thick outside edge to take the ball running in the deep third man region. The single takes up the score to 18 runs. The fifth over, which is in progress, and what a control of the runs, especially in the 6 overs of the power play. In the T20 format of the game, 6 overs of the power play is definitely an advantage for the batters to make their chances fancy. If they hit a good stroke right in the gap, the ball will race away to the fence, except those two occasions where the fielders have been deployed in the deep boundary line. A very quick dot ball to sum up the over number 5. Score is 18 for 2 after the completion of 5 overs. As Prashant Gadekar says, over. Welcome back, and beginning of the last over of the power play is once again Shekhar Betolkar from the far end into the bowling proceeding. Score is 18. Good control on the runs, not giving anything away, maintain that perfect line, good line and length from the bowlers, and both the bowlers have done a wonderful job with 1 wicket each to their credit. Once again, wishing a happy weekend for all the listeners who has joined us live from Goa livecast to view this match. Oh, lovely shot pulled this time, gone past the field, and the ball might just race away to the fence. Oh, good pulled back right on time, just maybe a meter away from the boundary rope. This is fantastic fielding, good commitment. Well done, says the fellow fielder. This kind of beautiful fielding has been very constantly been seen on this ground. The youngsters are putting a lot of efforts to stop the ball. Lovely shot right out from the middle of the bat. Oh, what a fantastic fielding. Once again, the deep sweeper cover. The ball was rocketing away right from the middle of the wood. Sheer timing that was, and a fantastic fielding as well. A good cricket to see. As now the match is getting really interesting. Chetan Mardalkar has been brought into the bowling proceedings in the 6th over the power play, and good lining. This is he's a very quick between the wicket.
As the sun is shining and hiding behind the clouds, playing hide and seek. Well, I thought it's Shekhar Beturkar. Round the wicket, he's a very fantastic, very good Chetan Madulkar. Look at that, no room absolutely whatsoever. Literally, the batsman has to make himself room and play, just angling it in the short third man for a single. Such a good control ball, been consistently been bowled by the bowlers right from the beginning. Vikesh from the far end, Shekhar Beturkar, and now it's Chaitanya Madurkar is also maintaining that perfect line. Simple logic, if you give room to the batsman, he will go boom. Simple as that. Look at the shot of length. This time he goes boom. A couple of bounces to the fence. Beautifully picked up in the deep, long leg region. That's gone for a boundary. And what a way to bring an end to the 6 overs of the power play. With the help of this boundary, the score has gone very quickly up to 26 for the loss of 2 wickets. And what a good partnership now working, I can see, between Mohit Tari and Paresh Gaonkar. Over. "26 runs after the 6 overs of the but so far." Prathamesh has been brought into the bowling proceedings in the 7th over, and as now you can see, there are 5 fielders now after the 6 overs of the power play comes to an end. What it was just 2 fielders. Now for the batters, singles and twos will be easy. Boundary. Nicely done. A bit of wristy. Mohit Tari showing a lot of sense and responsibility, as he's a captain and he has to really set an example by his action and not by words. As there's a saying, action speaks louder than words. And a good support has also been provided by Paresh Gaonkar. Quick one, shot of length once again been directed in the long leg region. Couple of bounces, the ball once again have gone rocketing away to the fence. Beautifully picked up this time from Paresh Gaonkar. Shot of length is not the delivery to bowl to these batters, as they have good pullers of the ball. In the last delivery it was a good pull from Mohit, and this time it is good pull from Paresh Gaonkar. Sending the ball to the fence, and with the help of this boundary, the score has gone up to quickly 30 runs. 31 runs. Oh, once again, slightly short of length, and the result will be the same. Oh, it has gone much longer. What it is, one bounce to the fence. A little bit of more bet on that. That would have gone all the way for 6. The umpire is still asking what it is. Yes, he's not certain. Yes, he's seeking the help of the cameraman Shivam Lemushe. Look at the sunscreen is not only used by the official umpires, the players, but even our cameraman with a sunscreen lotion.
Oh, once again, a replica of the same shot, but this time there is a field in the deep, long leg region. That is a good change in the fielding from the captain, because twice in that particular region, Paresh has hit the boundary, and this time, once again, he tried the similar kind of a shot. The ball went the distance but finds the fielder. Restricted the batters to just one on the back foot. Slightly angling it, slight fumble. There is a backup fielder. They will not take the risk of that single. Bisleri color is what is the jersey color of Union Sports Club of Marseille. It's a good team. The two brothers, Sarfraz Nawaz and Abdul Salam, will do the difference for sure. But in the meantime, a dot ball to sum up the over number 7. 36 runs for 2 after 7 overs. Over! "36 runs after the completion of 7 overs for the loss of 2. तो 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल अब जमकर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज पूरे लय में नजर आते हुए, और क्या ही साझेदारी, और जब कभी साझेदारी बनते हैं तो रन बनते हैं, और इसी प्रकार से एक खूबसूरत साझेदारी अब देखने को मिलती हुई कप्तान और परेश गांवकर के बीच। हालांकि फेलिक्स डायस के आउट होने के बाद बिल्कुल सुंदर बल्लेबाजी की है। और इस बार फिर से पकड़े गए परेश गांवकर। फेलिक्स डायस जिस प्रकार से शफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं, मगर प्रोफेशनल अंपायर्स हैं, कम ही मिस्टेक करेंगे। तो जब मैंने कहा कि एक अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही है, तो पता नहीं किसी की नज़र लग गई, परेश गांवकर आउट होकर वापस पवेलियन। 3 विकेट के नुकसान पर यूनियन स्पोर्ट्स क्लब काफ़ी नाराज, परेश गांवकर अभी भी मुड़कर देखते हुए। और हालांकि हमारे प्रोफेशनल अंपायर कराओके सिंगर हैं, मन ही मन गाते होंगे, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। सरफराज नवाज, प्रेम से या प्यार से कहते हैं उन्हें चप्पू। जब चलता है उनका बल्ला लगता है जैसे चक्कू। तो एक होनहार अंडर 23 गोवा स्टेट के लिए खेल चुके हैं, काफ़ी टैलेंटेड ऑलराउंडर परफॉर्मर सरफराज नवाज। जिस प्रकार से 2 इंटरनेशनल भाई खेला करते थे, न्यूजीलैंड के लिए मैकुलम, इंडिया के लिए पठान, अब खेल रहे हैं पांड्या ब्रदर्स, अकमल ब्रदर्स पाकिस्तान के लिए, हसी वॉली ब्रदर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, ब्रावो ब्रदर्स वेस्ट इंडीज़ के लिए, फ्लावर ब्रदर्स खेला करते थे जिम्बाब्वे के लिए, कूपर ब्रदर्स नीदरलैंड के लिए, कुरन ब्रदर्स इंग्लैंड के लिए। उसी प्रकार से शेख ब्रदर्स खेल रहे हैं यूनियन स्पोर्ट्स क्लब के लिए, सरफराज नवाज और अब्दुल सलाम। पिछले महीने मड़गांव में जो कि साउथ गोवा प्रीमियर लीग हुआ था, उसमें इनकी टीम ने जीत हासिल की थी। कप्तान मुख्तार कादरी के नेतृत्व में खेल रहे थे दोनों ही भाई, और बिल्कुल बड़ी जीत, यानी कि फाइनल्स के विजेता थे, चैंपियंस कहलाए उस टूर्नामेंट के, जिसकी राशि थी 2 लाख रुपए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दमखम के ये दोनों ही भाई हैं। बिल्कुल किसी भी कप्तान के हॉट फेवरेट, और ख़ास तौर पर अपने बेहतरीन खेल के लिए जाने जाते हैं सरफराज नवाज और अब्दुल सलाम। तो गोवा राज्य में बिल्कुल उस बड़ी राशि के बाद फिर से एक बार बड़ा टूर्नामेंट जो कि होने जा रहा है मई के महीने में। संभल कर पूरे बल्ले के साथ सुरक्षात्मक तरीके से खेला।
जानते हैं कि टिकना होगा और लंबी साझेदारी बनानी होगी। तो देखें इस प्रकार से रुकेंगे सरफराज नवाज। हालांकि फिर से एक बार एक विकेट की सफलता मिलती हुई। इस बार ड्राइव लॉन्ग ऑन की ओर 1 रन के साथ अपना खाता खुलते हुए सरफराज नवाज स्कोर को पहुंचा इस 1 रन के साथ 37 रनों पर। 3 विकेट के नुकसान। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनियन स्पोर्ट्स क्लब। हालांकि टॉस हारी थी टीम, टॉस जीता मेटाफन चार्जर्स के सुनील राठौड़ कप्तान ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय उनकी ओर से आया। आज के दिन का यह पहला मैच आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत, योकार, सुस्वागतम। हल्की सी बल्ले को मोड़ दिया है पॉइंट की दिशा में। 1 रन के साथ फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि पारी को संभालने का प्रयास होता हुआ। 8 ओवरों की समाप्ति, 8 ओवरों की माफ़ी चाहूँगा, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। इस ओवर के बाद बदलाव रहेगा कमेंट्री बॉक्स में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से तो यहां पे 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर 39 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6ठा सीजन चार्जर्स बनाम यूनियन स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला जा रहा है। गेंदबाजी करेंगे पवेलियन एंड से गेंदबाज डिमेलो। सामने बल्लेबाज तैयार, सरफराज डिमेलो की यह गेंद और हल्के हाथों से खेला, पुश किया। हालांकि जब तक गेंदबाज खुद पकड़ते मौका था 1 रन लेने का। अभी स्कोर जा पहुंचा 40 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। तो बहुत ही सुंदर मुकाबला यहां पे खेला जाता हुआ। मेटाफन चार्जर ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय आमंत्रित किया यूनियन स्पोर्ट्स क्लब को बल्लेबाजी करने के लिए। 3 विकेट है। इसी बीच एक बार फिर से बढ़िया गेंद, स्ट्रोक के लिए जगह बनाया और गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। हालांकि 1 ही रन मिलेगा और 3 विकेट के नुकसान पर मेटाफन चार्जर। बढ़िया गेंदबाजी। इसी बीच एक बार फिर से सामने बल्लेबाज तैयार, बढ़िया गेंद, फुल टॉस बना के खेला। हालांकि फील्डर मौजूद है, सीधे फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं। तो बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिलती हुई, समझबूझ के साथ बल्लेबाजी। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, गेंदबाज की गेंद और यहां पे सीधे गेंदबाज के हाथ में खेला था। एक मौका हो सकता था कॉटन बोल्ड का, लेकिन यहां पे मौका छूटता हुआ। तो निश्चित रूप से एक जीवन दान यहां पे सरफराज को मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्के से पुश किया था और गेंद गई थी बॉलर के पास, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाया। थोड़ी सी दिक्कत और फर्स्ट एड किट की जरूरत। बहुत ही सुंदर प्रयास हालांकि वहां पे गेंदबाज द्वारा, बहुत ही बढ़िया प्रयास, डाइव लगा के कैच पकड़ने का प्रयास किया था गेंदबाज डिमेलो ने। हालांकि कैच नहीं पकड़ पाए और बढ़िया प्रयास। वो कहते हैं ना कि वादे तो टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो कोशिश जारी रखना चाहिए। इस बीच
आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, जैसी चाही थी वैसे ही तकदीर बन गई। हमने तो सिर्फ रेत में उंगलियां चलाई थी, गौर से देखा तो आपकी तस्वीर बन गई। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहां पे देखने को मिलता हुआ। खेल कुछ समय के लिए रुका है और डिमेलो जो कि थोड़ी सी दिक्कत में, अब तैयार हैं गेंदबाज डिमेलो। पिछली गेंद पे हालांकि अभी तक बहुत ही सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं पवेलियन एंड से। एक मौका बना था और उस मौके को हालांकि पकड़ नहीं पाए गेंदबाज डिमेलो, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रयास, बिल्कुल अपने दाहिनी तरफ डाइव लगाकर कैच पकड़ा था और गेंद छिटक गई थी इसी बीच। अब तैयार, सामने बल्लेबाज भी तैयार। डिमेलो चले और हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद हैं, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई, एक ही रन मिलेगा। तो इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब। इसी बीच एक बार फिर से बहुत ही सुंदर गेंद, पुश किया, कोई रन नहीं और ओवर की समाप्ति। तो यहां पे 9 ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर 42 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब। तो इस तरह से यहां पे 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर 42 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। और 10वां ओवर लेके आए हैं चेतन, सामने है बल्लेबाज सरफराज। गेंदबाज तैयार, स्पिन आक्रमण, बढ़िया गेंद, धीरे से खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के करीब, फील्डर मौजूद है। इसी बीच बल्लेबाज के पास मौका छोर बदलने का, चहलकदमी करते हुए रन पूरा किया। एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ, स्पिन आक्रमण यहां पे होता हुआ। बहुत ही सुंदर फील्ड की जमावट, इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद, धीरे से पुश किया, कोई रन नहीं। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून, ना रोने से कल पड़े, मुद्दत के बाद उसने जो कि प्यार की निगाह, जी खुश तो। इसी बीच
और अब की बार हालांकि गेंद बैट का अंधोड़ी किनारा लेके चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में, और एक और यहां पे महत्वपूर्ण रन जुड़ता हुआ धीरे धीरे पारी को लंबी पारी यहां पे खेलने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और काफी मौका भी है। अपने आप को समय दें, जब मौका मिले हाथ खोलने का तो हाथ खोलें। फील्ड में अपने फील्ड को सजाते हुए गेंदबाज इसी बीच और बहुत ही बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर मौजूद है, हालांकि थोड़ी सी सुस्ती, जब तक थ्रो करते चतुर चालाक बल्लेबाजों ने इसी बीच 2 रन यहां पे पूरा कर लिया। जैसे ही देखा फील्डर बाउंड्री लाइन से थोड़ा सुस्ती कर रहे हैं, पूरा मौका, और यहां पे जहां 1 रन होना चाहिए निश्चित रूप से यहां पे 2 रन, तो बिल्कुल चीते की रफ्तार से यहां पे रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इसी बीच। एक बार फिर से गेंदबाज चले, फिर से हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और फिर से जब तक थ्रो आता चहलकदमी करते हुए आराम से बल्लेबाजों ने अपना रन पूरा किया। बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहां पे देखने को मिलता हुआ। इसी बीच और अच्छी गेंद, फिर से पॉइंट के बगल से खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते, फिर से बहुत ही बढ़िया विकेट के बीच दौड़, और यहां पे 2 और रन मिलता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो यहां पे 10 ओवर की समाप्ति, स्कोर 49 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब तो इस तरह से यहां पे 10 ओवर की समाप्ति, स्कोर 49 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब अब गेंदबाजी करेंगे पवेलियन एंड से। डिमेलो, बिल्कुल डिमेलो चले पवेलियन एंड से, बल्लेबाज आगे आए और गेंद को रोकना चाहते थे, हालांकि पैर पे लगती हुई गेंद स्लिप के क्षेत्र में गई। इसी बीच एक और यहां पे रन आता हुआ, और हमारे अंपायर महोदय ये बताते हुए इसी 1 रन के मदद से अब यहां पे 50 रन यूनियन स्पोर्ट्स क्लब टीम का यहां पे 50 रन पूरा होता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से बॉलर चले और हल्के से वही विकेट को पुश किया, जब तक फील्डर उठाते फिर से मौका था 1 रन लेने का, तो बहुत ही चतुर बल्लेबाज गेंद को वहीं पे पुश किया और निकल पड़े रन लेने के लिए, और यहां रन भी यहां पे पूरा होता हुआ। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी अभी तक डिमेलो के द्वारा। बिल्कुल कुलदीप यादव की तरह गेंदबाजी करते हुए इसी बीच, और बढ़िया गेंद की बार फुल टॉस हो गई और हवा में फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पे कोई गलती नहीं, और यहां पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल गेंद फेविकोल की तरह गेंद हाथों में आकर चपक गई, और चौथा झटका लगता हुआ यहां पे सरफराज आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, तो यूनियन स्पोर्ट्स क्लब को लगने वाला चौथा झटका
बहुत ही सुंदर यहां पे कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब में खड़े फील्डर के द्वारा। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ नहीं बल्कि झोला लेकर खड़े हो और गेंद आई उनके हाथों में समा गई। तो बहुत ही सुंदर कैच यहां पे साहिल के द्वारा, कोई गलती नहीं। आखिरी समय तक निगाहें गेंद पे बना के रखा वहां पे खड़े फील्डर और अंततः कैच लेने में सफल। तो चौथे विकेट का पतन हो चुका है यहां पे। मेटाफर्न चार्जर्स को मिलने वाली चौथी सफलता और नए बल्लेबाज गए हैं अब्दुल तैयार होते हुए। बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी, उभरता हुआ सितारा डिमेलो, बहुत ही चतुर गेंदबाज और स्लो फुल टॉस। बल्लेबाज लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारना चाहते थे। चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पे डिमेलो द्वारा और कोई गलती नहीं लॉन्ग ऑफ के फील्डर साहिल द्वारा। बहुत ही बढ़िया कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच। इसी बीच अब बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज भी तैयार। बल्लेबाज फील्ड का निरीक्षण करते हुए अब पूरी तरीके से तैयार। बॉलर चले, बढ़िया गेंद, फिर से फुल टॉस बना के खेला। हालांकि फील्डर मौजूद, डायरेक्ट फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी डिमेलो के द्वारा और बढ़िया गेंद ऑफ साइड की तरफ जा रहे थे, लेकिन बल्लेबाज ने कलाइयों का उपयोग, बिल्कुल बीबीएस लक्ष्मण की तरह आगे आए और कलाइयों को मोड़ा। गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद, हालांकि एक ही रन मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। अब सामने है बल्लेबाज मोहित, जो कि राहुल द्रविड़ संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। इसी बीच बढ़िया गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, सम्मान दिया और ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति, स्कोर 52 रन। 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब और अब गेंदबाजी में परिवर्तन। गेंदबाज सरवन्ना आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज अब्दुल। बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहां पे चलता हुआ। रॉयल T20 चैंपियनशिप। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन और विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सटे हुए इसी बीच, और बढ़िया गेंद फ्लाइट देते हुए, और हालांकि फील्डर के हाथ में गई थी, थोड़ी सी मिसफील्ड। और जब तक बाउंड्री लाइन से फील्डर आते थ्रो करते, मौका था यहां पे 2 रन लेने का, और 2 रन यहां पे पूरा भी करते हुए शायद थोड़ी सी गेंद फील्डर के अंगुलियों को छू के निकल गई थी, तो थोड़ी तकलीफ में हिमानी फास्ट रिलीफ, दर्द मिटाए चुटकी में। इसी बीच बढ़िया कट किया और गेंद जा रही है गली के क्षेत्र से, हालांकि फील्डर
का बहुत ही बढ़िया प्रयास। इसी बीच एक और रन आता हुआ, तो अगर थोड़ी दिक्कत हो आपको तो हिमानी फास्ट रिलीफ, दर्द मिटाए चुटकी में। थोड़ी सी तकलीफ में जरूर है, और फिर से फ्लाइट देते हुए धीरे से खेला, मौका था 1 रन लेने का। स्कोर जा पहुंचा 56 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। और सुंदर मुकाबला, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतेश नाइक जी को, जिन्होंने हमें यह मौका दिया हिंदी कमेंट्री करने का। और इसी बीच एक बार फिर से बिल्कुल लपेट के मारा गेंद, हालांकि फील्डर मौजूद थे, जब तक बाउंड्री लाइन के फील्डर आते गेंद को पकड़ते। फिर से मौका था 1 रन लेने का। तो धन्यवाद करते हैं हम। इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंद, सुंदर तरीके से खेला, सम्मान दिया, कोई रन नहीं। और जितने भी आप YouTube चैनल पर इस मैच को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का भी स्वागत बंदन। इसी बीच अच्छी गेंद और उठा दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, बादल को चीरती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही ताकत के साथ खेला हुआ पावरफुल स्ट्रोक, और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 63 रन और ओवर की समाप्ति। तो 12 ओवर की समाप्ति, स्कोर 63 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। पवेलियन से फिर से बिल्कुल एक छोर संभाल के रखा है गेंदबाज डिमेलो ने, डिमेलो गेंदबाजी करेंगे। इसी बीच हालांकि थोड़ी सी दिक्कत, और अंपायर का इशारा डेड बॉल का आता हुआ। बल्लेबाज अब तैयार हैं पूरी तरीके से। इसी बीच और बहुत ही सुंदर गेंद आप स्टंप के बगल से, और बल्लेबाज ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए। इसी बीच डिमेलो किए गेंद, अब की बार आप स्टंप के बाहर, निश्चित रूप से वाइट, और अंपायर द्वारा यहां पे वाइट का इशारा भी आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 64 रन। ना देख मेरी आंखों के ये भीगे हुए मौसम। इसी बीच डिमेलो चले, सामने बल्लेबाज के लिए, अब की बार दिलेश कुक खेल दिया, बिल्कुल गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत चौका, और इस तरह के शॉट 2011 में ज्यादातर तिलक रत्न दिलशान के द्वारा हालांकि खेला जाता था। तो घूंघट की आड़ में बिल्कुल आप स्टंप पे गए, जगह बनाया, और विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेल दिया, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये ऐसा स्ट्रोक है कि किसी को कोई मौका नहीं, और गेंद निकल जाती है खूबसूरत तरीके से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही सुंदर चौका, समर्थक ही नहीं बल्कि फील्डर भी उस चौके का आनंद लेते हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इसी बीच एक बार फिर से, और बढ़िया गेंद, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, अब की बार फिर से किसी को कोई मौका नहीं, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहां पे लगातार बैक टू बैक चौका आता हुआ, एक मिनट, अब्दुल के द्वारा, और इसी चौके के साथ
अब स्कोर जा पहुंचा 72 रन। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। बहुत ही सुंदर। अब थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन। देख मेरी आंखों के ये भीगे हुए मौसम, एक किसने कह दिया कि तुम्हें भूल गए हम। तो बिल्कुल यहां पे चौके लगाते हुए बल्लेबाज। इसी बीच एक बार फिर से, और अब की बार आगे आए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाया और खेल दिया। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल आकाश को भेदती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही 6 रनों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन छक्का। और इस पारी का लगने वाला दूसरा छक्का बल्लेबाज के द्वारा। अब्दुल के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का। और एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। सामने बल्लेबाज अब्दुल के द्वारा। इसी बीच बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला। फील्डर मौजूद हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। इसी बीच एक और रन पूरा होता हुआ तो ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति। स्कोर 74 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। हाँ, 80 रन ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति। स्कोर 80 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए शेखर। सामने बल्लेबाज तैयार। बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाया था वहां पे अब्दुल ने, और गगनचुंबी छक्का लगाया था जैसे हार्दिक पांड्या आखिरी के ओवर में लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, और बहुत ही बढ़िया गेंद धीरे से खेला। गेंद गई सीधे फील्डर के हाथों में। एक और यहां पे रन मिलता हुआ। स्कोर 81 रन। अब है सामने बल्लेबाज अब्दुल। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। क्या लाजवाब। हालांकि इस पारी में भी 2 ही छक्के लगे हैं, एक मोहित के द्वारा और एक अब्दुल के द्वारा। तो दोनों ही बिल्कुल आसमान को चिरता हुआ शॉट निकल गया था रॉकेट की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो 2 छक्के आए, 2 के दोनों गगनचुंबी छक्के। अंपायर, दोनों अंपायर और अब अपना अपना स्थान लेने के लिए जाते हुए। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और उतने ही सुंदर यहां पे गेंदबाजी और फील्डिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ। गेंदबाज को बढ़िया अभी तक सपोर्ट किया है फील्डरों ने। जब जब मौका मिला कैच पकड़ने का तो पूरी तरीके से पूरा समर्पण दिखाया है यहां पे फील्डरों ने। और अब बल्लेबाज तैयार होते हुए, फील्ड का मुआयना करते हुए तैयार। सामने गेंदबाज भी तैयार। चले, और बढ़िया गेंद, दिशा दे दिया। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। हालांकि फील्डर मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा।
तो मीडियम फास्ट गेंदबाजी और गेंद हवा में घूमती हुई, बिल्कुल स्विंग करा रहे हैं गेंदबाज, बहुत ही हवा में घूमती हुई गेंद। इसी बीच एक बार फिर से बढ़िया गेंद, धीरे से खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ, बिल्कुल जैसे भारत के भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करते हैं, मीडियम फास्ट स्विंग गेंदबाजी, बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी। और बढ़िया गेंद, और कट करना चाहते थे, हालांकि बहुत ही बढ़िया समझबूझ के साथ बल्लेबाज ने आखिरी समय में गेंद को विकेट से दूर किया, तो एक कॉटन बोल्ट का चांस हो सकता था, लेकिन यहां पे किस्मत भी साथ देती हुई। बल्लेबाज चतुर और चौकन्ने, गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लेके वहीं पे लुढ़क गई थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि जाके विकेट पे टकराएगी, लेकिन बल्लेबाज चतुर और इसी बीच बढ़िया गेंद और कट किया, हालांकि फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 84 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब और थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन, अभी तक बढ़िया गेंदबाजी, जहां जहां फील्डर लगाए हैं गेंदबाज, और बढ़िया गेंद, बिल्कुल, हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं, एक ही रन मिलेगा। तो शनैः शनैः गच्छति, धीरे धीरे बल्लेबाज अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, और इस तरह से 14 ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति, स्कोर 85 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद यूनियन स्पोर्ट्स क्लब। और आगे का 5 ओवर आपको आंखों देखा हाल अंग्रेजी में सुनाएंगे नदीम अहमद जी। 6 ओवरों का मेरे भाई, 14 ओवरों की समाप्ति और स्कोर 85। बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई अब्दुल सलाम जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लाजवाब, दर्शनीय, AB डिविलियर्स के नाम से जाने जाने वाला ये बल्लेबाज। और इसी बीच 2 रन आसानी के साथ मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हल्की सी फंबल वहां पर मौका दिया निश्चित तौर पर 2 रनों का, तो बिल्कुल लाजवाब रनिंग होती हुई, और क्या ही अच्छी साझेदारी, जिस प्रकार से अपेक्षा की गई थी कप्तान से कि कप्तानी भरी पारी खेलेंगे, तो वही पारी को यहाँ पर दिखाते हुए मोहित तारी बिल्कुल लाजवाब रुके हैं, डटे हैं, टिके हैं एक छोर पर, और उनका बखूबी साथ न सिर्फ निभा रहे हैं बल्कि सुंदर शॉट्स के साथ रन भी बना रहे हैं अब्दुल सलाम। पटकी हुई गेंद हल्की सी दिशाहीन मगर प्लेबल डिलीवरी आंकी गई अंपायर प्रशांत गडेकर की ओर से, तो बिल्कुल सुंदर बल्लेबाजी होती हुई, जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो कि दिखाई दे रहा है क्रीज पर, बिल्कुल लाजवाब। मोहित तारी जो कि कप्तान है यूनियन स्पोर्ट्स क्लब के, संभल कर इक्का दुक्का रन के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए, और दूसरे AB डिविलियर्स अब्दुल सलाम बिल्कुल स्कूप के साथ, इनसाइड आउट के साथ लंबे शॉट्स खेलते हुए। इसी बीच खेल दिया है गली की ओर 1 रन के लिए। तो जिस प्रकार से कंट्रोल एग्रेशन की बल्लेबाजी होनी चाहिए T20 के मैच में,
उसी का एक बेहतरीन मिसाल यहां पर पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज रुक कर थम कर बिल्कुल अपनी विकेट की सुरक्षा के साथ रन बनाने की प्रतिक्रिया बिल्कुल जारी है। हालांकि जैसे मैंने जिक्र किया था कि दो भाई जो कि लाजवाब सरफराज नवाज अब्दुल सलाम, बिल्कुल आज सरफराज नवाज का बल्ला लंबा नहीं चला मगर अब्दुल सलाम निश्चित तौर पर लगता है अर्धशतक जरूर बनाएंगे। ये 15वीं ओवर जो कि जारी है और गेंदबाजी के क्रम में गेंदबाज विकेश जिन्होंने पहली विकेट की सफलता दी थी अपनी टीम के लिए पवेलियन एंड की ओर से। बड़ा शॉट खेलने की फिराक में बिल्कुल पूरी तरह से मिस कर गए। इसे कहते हैं प्री मेडिटेटेड शॉट, यानी कि अंदाजा लगाते कि इस रेंज में आएगी गेंद और मैं दे मारूंगा। कभी कभार जोखिम उठा लेते हैं अब्दुल सलाम मगर अक्सर दर्शनीय शॉट लगाकर मनोरंजन करते हैं दर्शकों का। संभल कर खेला, ये देखिए पूरे बल्ले के साथ कवच की दिशा में सेंसिबल बल्लेबाजी होती हुई। हालांकि अब तक कुल मिलाकर 4 विकेटों की सफलता मिली है मगर ये जोड़ी बिल्कुल कारीगर साबित होती हुई। और बैकफुट पर संभल कर हल्की सी अपील होती हुई विकेश की। इस 1 रन के साथ 90 रन पर पहुंचते हुए 15 ओवरों की समाप्ति। स्कोर हुआ है 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करती हुई यूनियन स्पोर्ट्स क्लब मार्सेल। Sarvanna has been once again been brought into the bowling proceedings from the far end to begin the 16th over. Sarvanna Sabkana, as we all know, wonderful player. Good looking drive on the front, long off region, good fielding, good throw as well. Could be 2 now, no waiting is the call, as the wicket keeper is there for the backup for that drive from the captain's bat. Mohit Tari, such a wonderful striker, and look at the temperament what he has is amazing. That a captain should always have this kind of temperament, calm, cool, collective, relaxed frame of mind, and playing a long but sensible inning is the captain's batting. On the other end is a very entertaining batsman, AB de Villiers, 360 degree. Nicely angled it ball, the racing away. There is Brian Lara. Wonderful footwork from Sahil Gowns. Very quick on the ball. And we have seen on many occasions on this ground, the ball has just gone past the fielder in spite of being doing a good footwork. But Brian Lara is just spot on. He is definitely playing football. And he is the fan of Cristiano Ronaldo. Wonderful fielding, saved 2 runs for team. Once again in the deep third man region, no fumbling from Sahil Gowns. Such an amazing cricketer that he is, Sahil Gowns from Navelim. A lot of talented cricketers are coming from Navelim. You name W. Avinash Gowns from Navelim, Samad Gowns, who's known as Superman, is from Navelim, Gopal Gowns from Navelim. Change of pace, picked up beautifully by Mohit Tari. Wonderfully picked up. It was a slow one from the bowler Sarvanna.
But reading the length and line early on is very important for the batsman, and that is exactly what Mohit Tari did. He picked up the line and length for the slow one, and bang, she goes in the deep mid-wicket region for a fence, right in the gap. This is good batting from these two batters. But let me tell you one thing, our cameraman Shivam, his favorite team is METAFURN Chargers. Shot of length this time, but finds the field in the deep point region. That will be just 1 run conceded to the batters. Another single adding up to the tally. 99. Completion of 16 overs, 99 for 4. To begin the 17th over, it's Chaitanya Madolkar. Lovely drive straight back to Chaitanya Madolkar. Wonderful fielding. Score is 99, just 1 runs away from the 3-figure mark of 100. What a contribution of runs from these two batters. Amazing batting skills. Lofted shot, the ball is up and there is a fielder beneath. He's settling down, picks up a catch, and the captain is dismissed. Was looking for the lofted shot. He was batting so well. There was no need for Mohit Tari to go for the lofted shot, as Abdul Salam was definitely cut losing. He had to stay there, but however, it was emotions, and he just was quite confident to take the ball out of the park. Maybe missed the timing completely and paid the price with his wicket. 5 wickets down as Dipesh Naik joins in. And as we all know, Dipesh Naik with a one hit right out of the park in the deep square leg region that made win easy for the very first match of Union Sports Club of Marseille. Such is the capability of Dipesh Naik, a teacher by profession, but a very talented cricketer, putting in hard efforts. Look at that, METAFURN Chargers, the house of furniture, celebrating the wicket of Mohit Tari. How dangerous he was. And what a long and sensible inning was being played by Mohit Tari. Gave the much needed partnership which the team was looking for after the quick fall of the 4 wickets, including Sarfaraz Nawaz, who's immensely talented cricketer, one among the best cricketers of Goa. Sarfaraz Nawaz, who played for Goa under 23, amazing all-rounder performer and a specialist T20. The running between the wickets, the running on the field, the batting, the bowling, absolutely amazing for from Sarfaraz Nawaz. Hundred up for Union Sports Club of Marseille with this single.
Maybe that's the reason why he went for the lofted shot, wanted to bring that 100 in style, Captain Mohit Tari. And Lakshman Gowda picked up a simple looking catch, Australian style. A slight bit of a change in the fielding, as you can see, a little bit of movement there on the field. The deep square leg has been brought in the besides our karaoke official umpire, Santosh Govinkar. Nicely done. Just played with the gentle hands in the point region for picked up a single. It is not only Mohit Tari who has a good control of his mind and temperament is appreciated, but even Abdul Salam, look at that, he's now looking more responsible and playing more sensibly after the dismissal of the captain. Good looking drive inside out, beautifully timed shot that is, absolutely fantastic, inside out, what a glorious cover drive from Dipesh Naik, right out from the middle of the bat and the ball has gone straight past the fielders. No one moved and the ball raced away. That is the quality timing from Dipesh Naik, wonderful timer of the ball that he is on the front, took the ball on the half volley and the mixture of the pace from the bowler and also the drive. What a perfect execution of that boundary. Cracking beauty. Loud shout, confident appeal. A very close call though that was. The heart must have been in the mouth of Dipesh Naik. Quickly he just walks away. 17 was gone by. 105 for 5. Absolutely, what a good recovery. And now this is what exactly I like about the team, Union Sports Club, because they are capable of recovering and making a partnership. After that quick fall of the 3 wickets, there was a partnership between Mohit Tari and Sarfraz Nawaz, and after the wicket of Sarfraz Nawaz, it was Abdul Salam and Mohit Tari carried on to take the score to almost 99. And now Dipesh Naik joins Abdul Salam. Once again a partnership is looking good between these two, as both the batters have boundaries to their credit, and whenever the batsman hits the boundary, that gives him the kind of confidence to play more of those and not looking shuffling and not looking trying to just get settled down. He's looking very positive and energized. Dipesh Naik looking very effective with the body language. Sarvanna Sabka Anna, a regular player for Goa Police, who's been regarded as the undisputed champions when it comes to the T20 format of the game in Goa. Shot of length, the ball is up and there was a fielder. A jump could not reach to the ball. The ball has just gone past the fielder straight to Sahil Gowns. Well, that would have been a risky direction being shown by Dipesh Naik. Twice he's just got lucky, one with the loud shot and confident appeal for the LBW in the last delivery of Chetan Madolkar's over, and now the ball just gone past the fielder. Unmesh Khedekar, the Sam Curran of Goa, with that jump. And what a lovely play that he is, a good batsman, Unmesh Khedekar, making his mark and coming up, very talented youngster, one among the best young talents of Goa is Unmesh Khedekar. Oh, once again Unmesh this time, dive like
John T. Rose, a slight fumble there from Sahil Gowns. Very disappointing for Sarvanna. Sahil Gowns, it was so easy stuff for him there. He is disappointed with himself. Things happen, and this is the pressure what we can see right on the field. It is not only the batsman who's under pressure with a good bowling, but even the bowler comes under pressure, and so are the fielders. Sahil Gowns did a fantastic job in that area in the deep third-man region, stopping all the balls coming his way, but this time slight fumble has taken the ball, just rolled over the boundary rope, and the score with the help of this boundary. 1-1-1 Nelson. 1-1-1 Nelson. Sunay Naik stood on one leg, but I see both these officials, they don't believe in superstitious beliefs. It was David Shepherd who's to stand on one leg when the figures to be 1-1-1. It has been regarded as an unlucky number. Can Santosh Goenka stand on one leg? No. He's comfortable with two legs. Yes, there is. Right in the camera. Santosh Goenka is bringing the lighter moment. Smiles on the face of the audience. Good one. Good gesture. Sarvanna, in the meantime, no smiles. He's annoyed, he's upset, he's angry, looking for wickets. Slow one. Didn't quite time the ball. A drive from Abdul Salam is just lying low. I wonder why. Maybe just trying to give some time for Dipesh Naik to just form a partnership. Look at the change of situations of the match. When the things were looking quite good, there was a fall of the wicket. Good hit, didn't quite get hold of this one. That should be just one, not more than that for Dipesh Naik. Now going with the singles, maybe waiting for the right opportunity. He's an unpredictable batsman, Abdul Salam. He's like a silent volcano. When he erupts, firework all over. He's such a kind of a batsman. Oh, this time the helicopter drive from Abdul Salam misses the line completely. A dot ball to sum up the over number 18. 103 for the loss of 5 wickets after 18 overs. One 3 after 18 overs for 5. Should be looking for 2. Dipesh Naik was very slow on that occasion. When Abdul Salam wanted, Dipesh Naik was very quick. Abdul Salam was just wanted a single. Now they should look for more runs. Where there is 1, they should look for 2. Where there is 2, they should look for 3. And that is exactly what they need to do for the moment. Maybe now it is time to swing big for Abdul Salam as he's just getting geared up, pulling up his gloves and ready to take on Shekhar Bidodkar. Oh, bowled him completely, missed the line, Abdul Salam. And the ball right onto the stump. That's the curtains down for Abdul Salam, who came down the wicket and missed the line completely. The 6th wicket down on the total of 114 in the 19th over. 33 runs contribution from Abdul Salam. But he's not happy and satisfied because he wanted to just cut loose. It was a time now as the 19th was just begun. In the very first ball he came down the track making his intentions very clear that he will go for no matter what the ball is, he will go for the big ones.
In the bargain, he just missed the line. However, he has played his part for sure, contributing 33 valuable runs from his bat. Prabhakar walks in. I remember when I was a small child, there was a player called Manoj Prabhakar who used to play for India. He was a good bowler, then becomes a batsman and who used to go opening. I'm sure Santosh Govekar and Prashant Gadekar remembers who is Manoj Prabhakar. If Santosh Govekar just raise his hand, I will get the acknowledgement. Yes, he remembers who is Manoj Prabhakar. And can I get the same signal from Prashant Gadekar? He knows Manoj Prabhakar. He don't know. Maybe he was very small. Maybe not born in that during that period. However, Prabhakar walks in, and this is the batsman number 8 who has walked in after the dismissal of 6 wickets. With Dipesh Naik now, Dipesh has to take the responsibility. Left hand, right hand combination will help and will work as a advantage for batters. Swing and a miss this time, but Shekhar Bethodkar is just bowling his best. The bowler with the golden arm picked up a crucial wicket of Abdul Salam. What a good control once again. Just making the batters guessing how to play this kind of deliveries. Top quality deliveries from Shekhar Bethodkar. A little bit of inside edge. It could be a chance for an out here. He's just running. There is a no from Dipesh. Quickly recovering and getting back to his crease safe. Prabhakar. What a turnaround after the fall of the wicket of Mohit Tari and Abdul Salam. And look at that once again. The ratio of the run flow is going down. What they were scoring at the rate of 8 to 10 runs every over, keeping the ratio consistently good couple of overs during that tenure of batting. And now after the wicket fall of Mohit Tari and Abdul Salam, and now batters are looking struggling. Top edge. Could be 2. Just 1. The last time Dipesh Naik wanted 2 when Abdul Salam just stopped him on 1, and now when Prabhakar wanted 2, Dipesh Naik hold him on 1. Maybe he just wants to have the maximum of the strike. It is a good thought, no doubt, as he is capable of playing more brilliant shots than Prabhakar. Dipesh Naik. Good drive, a gentle drive. Right in the block hole is what Shekhar Bethodkar is aiming for. Wonderful over comes to an end. 19 overs gone by. 116 for 6. And 3,688 new infections reported in last 24 hours. So I'd like to just convey the message to all the listeners. Please be careful and wear mask. Don't be casual and careless about the COVID. Lovely shot. The ball is right from the middle of the bat. That will go a distance backward of the square leg umpire. In the similar manner, he hit the ball in the last match as well, which brought victory to the team Union Sports Club. And once again, Dipesh Naik is getting in the groove of batting. And he's definitely throwing his bat no matter what. He will swing. Remaining 5 deliveries as scored with the help of this 6 has gone up to 122. Another one.
Might just race away to the fence. Excellent piece of work there. Good commitment. Two from our scorer. Score is 1-4. New batsman who has just walked in is Shubham Gupta. Two deliveries remaining and Shubham Gupta on strike. Score is 124. Oh, lovely shot. That will go a distance. It will. That's a 6. High, handsome, colossal, mighty, gigantic. Right out of from the middle of the bat. In the deep square leg. I think deep square leg is the position of the favorite of all the batters. Abdul Salam hits it in the deep square leg. Dipesh Naik hits it in the deep square leg. Shubham Gupta hits it in the deep square leg. What is the secret of deep square leg? There is a fielder in the deep square leg. Last ball. Once again in the square leg region, a single to take the score to 129. 132, yes. 132 is the target to achieve for METAFURN Chargers in 120 deliveries. Can METAFURN Chargers get to the target of 132 to win in 120 deliveries, or can Union Sports Club Marseille with their good bowling attack and good fielding will restrict the batters of METAFURN Chargers? His official umpire says it's over and time. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल
Yes, we are ready, sir. A warm welcome and welcome back. "132" is the target. A lovely drive, beautifully worked and played. That is absolutely nailed on. He has just nailed it beautifully, and the ball coming right out from the middle with the pace from Sarfraz Nawaz. And what a cracking beauty that is to start with the run chase of 132 to win at the rate of 6.6. What a brilliant driving that is from Sahil Gaunsi. That's the reason why he's earned that name, Brian Lara. Kya hai mara? Beautiful execution of the shot. Right. He doesn't require time to get settled down, just to get the feel of the ball, how the ball is coming to the bat. No way. No wasting of time. Straight away. Bang. She goes. In the deep extra cover. Rocketing away. From the pad this time. Oh yes, it's a call from Sunil Rathod, the captain. Good running, he says. Sahil, he's showing thumbs up. It's only my comment which realized him that the captain is showing the thumbs up. He's quickly responding back. The first reaction if Sahil sees me will be a big smile on his face. Very jolly, very humble, very disciplined. I wish him all the best for his cricketing career. Discipline will take the player long way. That I have seen that humbleness in Sahil, young talent of Naveli, playing a lot of tournaments. Would I miss the leg stump? Would I miss the leg stump for sure? In spite of the fact that there was an appeal from Sarfraz Nawaz, the ball just swinging away. A slight drift, as we can see from the camera angle. We have a very professional cameraman, Shivam Shinde, better known as Leoshe. Nihal, the videographer, as well as the DJ. He's in two duties in the meantime. A good length delivery, a perfect delivery for the right hander from Sarfraz Nawaz, trying to just minimize the chances for the batters not to score many runs right from the beginning, as there was a cracking beauty from the left hand batting sensation Sahil Gans with the very first delivery of Sarfraz Nawaz. Was that executed in style? Such a wonderful shot that was to watch, racing away to the fence. Oh, nice little bit of wristy. The ball has gone once again drifting down to the leg side, and a wide signaled the extra to take the score to 6 runs. But a good combination of plays is the team of Union Sports Club Marseille under the captainship of Mohit Tari. Lovely shot. The ball is up in there. Could be the first. Oh dear me, the ball was up and just got lucky. Sunil Rathod, slight fumble there. Could be 2 here for Sunil. He completely mistimed it. The ball was up in the air within the reach of the fielders, but right in the gap. Maybe someone special watching his batting and praying to the Almighty Lord that Sunil Rathod come up with 50 runs at least, as he's the captain who should set a good example how to bat and how to just get going to get to the target of 132 to win. The ball is up again this time. Once again he's got lucky. Luck is with Sunil Rathod. The aerial shots. Look at the disappointment. And the body language of Sarfraz Nawaz. Oh dear, he says on the 2 occasions. Sunil Rathod just got narrowly escaped. A completion of 1 over, 9 runs for the loss of no wicket.
The ball is up in the air this time. Once again, just got lucky. 3 survival for Sunil Rathod. Every time his timing, the ball is up in the air. Quickly apologizing to the fielder. Shubham Gupta from the far end into the bowling proceedings, who has begun the second over. You can see a lot of changes in the fielding as the left-hander gains the strike with the help of the chalk. He's making the marking. Sahil Gowns, left hand right hand combination right from the beginning. Always a good choice for the captains. Every time I see the opening pair is the combination of left hand right hand. Shubham Gupta will try to keep it minimum the opportunities for the batsman, as he's a good bowler, the regular bowler for Union Sports Club. On the back foot, well bowled. Look at the line and length was just outstanding from Shubham Gupta for the left-hander. On many occasions, many bowlers find it very difficult to maintain that perfect line for the left-hander because they are used to bowl for the right-handers. Because what becomes the offside for the right-hander becomes the leg side for the left-hander. But look at the beautiful adjustment from Shubham Gupta. A perfect line to bowl to the left-hander. Shot of length, pulled, there's a fielder. Almost had taken a catch. The ball just bounced after the impact of the ground. Good commitment, almost held Sahil Gowns. An opportunity going down. Both the batsmen are surviving with luck. That was straight up to him in the deep square leg region. Shot of length delivery from Shubham Gupta and pulled by Sahil Gowns straight to the deep square leg fielder. And what a good commitment from this youngster. Almost held it. But maybe slightly he lacked the confidence. There the things went wrong. Oh, this time the ball is up in the air and once again just got lucky. Will be a boundary here. This is the 4th time that it has happened that the ball is up in there from Sunil Rathod with the mistiming. The ball almost everyone thought could be a catch. Everyone's mouth is open and the ball has just gone past the fielders. The batsman has to be more careful, especially Sunil Rathod. 1s and 2s will be very handy score as Sahil Gowns is good picker, good selector of the shot. To execute in the power play overs. On the front. Slightly uppish delivery played in the covers for another additional single, adding up to the total after that boundary in the deep fine leg region. They will be shuffling across every rotation of the strike for the left-hander. His official umpire Prashant Gadekar is just nodding his head. I will not going to run from my place to the square leg for the left-hander. I don't believe in jogging in the afternoon. Good line, perfect line. To mark the end of 2 overs, 16 runs for no loss.
Union Sports Club's ABD Villiers Abdul Salam on the bowling mark. To begin the third over, he has replaced Sarfraz Nawaz, who started the opening spell. On strike is Sunil Rathod, the captain of METAFURN Charges. Well bowled at the very first ball, going whistling, zooming, passing by, straight to Dipesh Naik behind the stumps. Wonderful batsman, wicket keeper. Good line. It is the temperament of the batsmen, how far they survive on the crease. Just playing singles and twos should be the style of batting for the batsman. In the meantime, just a nudge and waiting is a quick call from Sahil Gauns. And what is advantage in the T20 format of the game is, of course, not making the good use of the power play. But in spite of that, if you can just give a good start, at least surviving for 6-7 overs without giving your wicket, that will definitely boost the confidence for the batters coming down the order to get to the target of 132, which is not much in T20. What they need is just 6.6, almost 7 runs, 6 to 7 runs an over. Once again, the ball is up in the air, but that will be just one, could be two. Yes, they will get it too easily with one with the overthrow. Shy on the stump, there is no one to back up. That's the reason why it has resulted in the overthrow. These 2 runs will take the score up to 18 runs. Somehow they managed to just pull for 1 and 2. And Sunil Rathod should be more technically good. Like how exactly the captain Mohit Tari played a sensible inning. Not really required to get boundaries after boundaries. Nicely done. Playing sensible inning also can serve the purpose. In the meantime, there was slightly a mix-up as Sahil Gauns literally ran. And with less option and no option, Sunil Rathod had to run to the non-striker's end. A lot of running around, that's the reason why he's slightly exhausted and taking a deep breaths and having a seat to just recover, give his body some rest. Not easy in this scorching heat, blazing sun out there after in the summers, as the temperature is soaring beyond 35 degrees Celsius, as the mercury level is going high. But a little bit of breeze, which is giving some comfort to not only fielders, umpires, batters, but also to the commentators and the scorer and our cameramen, because this ground is at a height. Oh, this is poor. Could be 2 here. Yes, it is. Very disappointing. Captain Mohit Tari, he may be good in batting, but when it comes to fielding, he has to improvise. He is annoyed and unhappy on his own self. Awaz Zaun in Konkani, that beautiful, sweet Konkani, they say, let us make some noise. Lovely. Lovely drive. What a beauty. Sheer timing from Sahil Gauns. Absolutely cracked it. Brian Lara. Once again in style, and look at the execution. The ball coming right out from the middle. He knew that ball, the moment the ball left the bat, it was boundary. The soothing sound to the ears was so good to hear. Bang! She goes once again. End of 3 overs, 25 runs.
3 overs gone by. It's 25 without a loss. And what a cracking shot that was from Sahil to end the third over of Abdul Salam. Shubham Gupta once again from the far end into the bowling proceedings to begin the fourth over. In the leg side, a slight fumble there from Dipesh Naik will allow wide and a single, 2 runs straight away to the tally of the score total 27 runs with the help of these 2. The bowlers of METAFURN Chargers were more effective as compared to the bowlers of Union Sports Club Marseille, as all the bowlers maintained a perfect line and length, especially Vikesh, who bowled such a great spell. Shekhar Betodkar. The key was the perfect lining, which wasn't allowing the batsman to score much runs. Nicely done, wristy work on the jump. This is exactly how Brian Lara bats, on the jump and with the wristy work, the ball sending the square leg region. And Sahil Gowans is more than happy to be associated with legendary left-hand batting sensation. After Sachin Tendulkar, the big name in batting, it has to be Brian Lara. Kya hai mara? Quick delivery from Shubham Gupta. Beaten on the pace. Sunil Rathod still surviving after 3 overs, but now looking more sensible, more matured, looking more responsible, more like a captain. He needs some time to just get himself to settle down, which is good, no problem. Look at that beauty, just working their way to get some runs. Another single adding up to the total. A warm welcome to all the listeners who has just joined us through Goa Livecast to view this match. A very good afternoon. It's 12 past 6 minutes. Yokar. 132 is the target. Has been chased by METAFURN Chargers, the house of furniture, against Union Sports Club of Marseille. Half volley, outside edge, but straight to the field in the point position. Protection there, no chance of a run. The ball has gone very quickly from Sahil Gowans' bat. And what a good fielding as well, very quick. Look at the wall of fielders there. Gully, point, cover, extra cover, mid-off. In the middle of the wall, there is an official umpire as well in the red jersey. A drive straight to the field in the mid-off region. And look at the jersey, it's called Bisleri. The uniform color. And that good advertisement from of Bisleri, that a camel is coming and drinking the Bisleri water and not other brand water, as he says, Gada nahi hu tu. This time the ball will once again pass by, and it's a good looking shot. Sunil Rathod was very confident. The moment the ball left the bat, he was just watching the ball sailing above the head of the
mid-on fielder for fence. Beautiful boundary to bring an end to the 4 overs, 34 runs. Lot of activities happening in the meantime. Another single adding up to the total 35 is the score. A wicket will be very handy here for the bowlers to break this partnership, and what a partnership right from the beginning. Though they struggled initially. Abdul Salam with that just very quick inside from Sahil, and the score with the help of this single has gone up to 37 runs. His eyes on the ball, but ears on the sound, on the voice, which is keep him going. Sahil counts. He knows that he has to play a long inning as long as the team reaches to 132. And every match there are 3 gifts to be given away, 1 maximum 6s. Another 1 gift watcher and man of the match. Oh, rising delivery, well bowled. The extra bit of a rise was literally have surprised the captain Sunil Rathod. And Sunil Rathod every year is coming up with a beautiful tournament in Nityanand Sports Club. Last time it was at Sports Complex Ground, Fonda. This time it was at Karai Shiroda. Great success for his tournament. Lovely shot. The ball is up and will go straight out of the park. It looks like. Yes, it does. It's gone huge, high, mighty, gigantic, colossal, mighty, titanic sixer from the captain Sunil Rathod. Watchful played, sensible, absolutely sensible. After that mighty 6 in the mid-wicket region, and now he's playing sensible. What a maturity been shown by the captain Sunil Rathod, and what a good partnership. Slightly making bowlers helpless, how to bowl, which areas to maintain, how to get these batters out. Is the difficulty, they have to figure it out. What a good run chase from METAFURN Chargers. They need 88 runs in 91 deliveries. Almost a run-a-ball situation for METAFURN Chargers. Every ball a single also will serve the purpose. But as far as Brian Lara is concerned, he can cut loose anytime. On the back foot, once again appeal this time. Umpire says over. Completion of 5, 44 without a loss.
Shubham Gupta with the last over of the power play. His score is 44. Good hit straight to the fielder, and yes, it is. This time, no luck for Sunil Rathod, as the first breakthrough has been provided by Shubham Gupta as he picked up the wicket of the captain Sunil Rathod, who was batting so well. The first breakthrough, 44 for 1 after 5.1 deliveries. New batsman is Unmesh Khedekar, better known as Sam Curran. Samuel Matthew Curran is an English Zimbabwean cricketer who plays for Surrey Country Cricket Club in England. Curran is a left-handed batsman and left-arm medium fast bowler. Look-alike is our Markais. Very handsome-looking Unmesh Khedekar. Sam Curran, as is known as. And some also call him Quinton de Kock. Unmesh Khedekar. Confident appeal there from Shubham. He's literally pleading. How was that, umpire? Umpire says, leg by. Don't have to be so exciting. It's a young blood from Shubham Gupta which was boiling after that. A very quick delivery to Sam Curran. The heart must have been in the mouth of Sam Curran, very youngster, just 23 years of age. And what a skills that he's got. I wish him all the best for his cricketing career. He has to take cricket seriously. He can become one good star from Goa who will be playing for IPL. You never know, like Suyash Prabhudesai. And even there is a chances for the official umpires to make it to IPL, like how we have Yashwant Berde, who's making Goa proud, being the IPL umpire. Said Khalid. Santosh Govenkar can be one in IPL, and so is Prashant Gadekar. And there are opportunity for me as well. I can become another Ravi Shastri. Give your best of the performance, and the sky is the limit. Get hold of this one. Could be a couple of runs, or maybe the ball might just receive to the boundary. Beautiful boundary from Sahil Counts, and a much needed boundary. Just trying to
cut loose this time after that dominating bowling after the wicket of the captain. Just trying to free their arms, and once again a beautiful time shot from Sahil, the Brian Lara. Once again in style executing that in deep mid-wicket region. In spite of the fielder, they're trying to just stop the ball with the footings. He was unable to do so as the ball was speeding up. Because there was a plentiful of bat on that. A beautiful boundary in the mid-wicket region takes the score up to 48 runs. Just 2 runs away from the 50 mark. METAFURN charges. Good looking drive. The ball will go past. And once again, another beautiful boundary in the deep extra cover position. This time gets hold of this one. 50 up, in fact 53. With the help of this boundary, the score was 49. Correction. Wonderful shot to get to the total of 53 runs from Sahil Gauns. He's going back to back boundaries for Shubham Gupta. What a good striker. Look at the timing. The adjustment is so brilliant from Sahil Gauns. Don't you all see a Brian Lara in him? Absolutely. The style, the stance, the position, the execution, everything is quite similar. Oh, this time he just wanted to take the ball on the half wall. He this time on the rise, slightly squared that he wanted to go as all the fielders were within the 30-yard circle. A dot ball to sum up the over number 6. That is the end of the 6 overs of the power play. 53 for 1. So 53 runs coming up in the 6th overs of the power play. Sarfaraz Nawaz once again has been brought into the bowling proceeding to begin the 7th over. Sam Curran on the striking position, Unmesh Khedekar and Sahil Gauns. Both are left-handers. Won't be a big problem for the change, the fielding. As the fielding will be the same for both these batters, the young talents. Nicely done. Look at the tilt of the bat, which is so good to see from Sam Curran. Beautifully, he just angles the ball with a little bit of letting loose the hands. It's very important for the batters to spend some time on the crease. They will get adjusted, adapted to the situation and how the ball is coming to the bat. If once they get this judgment right, the things will be quite easy for the batters to time it. To time the delivery, doesn't matter if the batsman is playing for single or for a boundary or maybe for a 6. Whether the ball is holding on and then coming, or the pitch is behaving slow, or the ball is coming very quickly. Or the ball is skidding after falling on the matting and coming very quickly as expected. And for the new batsmen, it's always good to play for singles and twos. Yes, this is exactly how they need to just bat along, especially Unmesh Khedekar. They're going for 2. What a good call.
Excellent running between the wicket. That's the reason why the coaches advise the batters to keep the eyes on the ball. Slight fumble or slight late the fielder on the ball, you can take the advantage of going for 2 runs when it is single run. Absolutely stealing singles and twos under the noses of the fielders. Good looking drive straight down the ground, but there is a fielder. Will he cut it off? The captain himself, Mohit Tari, with a good... Oh, slight fumble there. The ball might just roll over. This is another fumble from the captain, Mohit Tari. What is happening? He has to reassess himself what is going on. Maybe the pressure. Being a captain as well as a fielder. Well, he can make a comeback as he's batted quite nicely. He should give himself a bit of confidence that I can bat well, so can I field well. It is no rocket technology. Nicely done. Look at that beauty from Sahil Gaon. The ball will win the race. Unmesh Khedekar, Sam Curran executed that beautifully with the wrist, a lot of wrist work that he's using. Another good talent coming from Madke after Bhaiya, that is Siddesh Naik. End of 7 overs. 65 for 1. सात ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल एक रोचक रोमांचक मैच होता हुआ इन दोनों टीमों के बीच। तो एक शायरी मेरे जहन में आ रही है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो बिल्कुल चलते जा रहे हैं बल्लेबाज और बिल्कुल चलना ज़रूरी, क्योंकि मंजिल दूर नहीं है, 132 का लक्ष्य उनके सामने। 8वीं ओवर की शुरुआत लेकर दूर वाली छोर से गेंदबाजी कर में गेंदबाज परेश गांवकर को लाया गया है, जिन्होंने बिल्कुल सुंदर बल्लेबाजी की थी। देखना होगा कि गेंदबाजी में क्या जौहर दिखाते हैं। बैकफुट पर खेल दिया इस बार, वहां पर खिलाड़ी तैनात। हल्की सी फंबल, 2 रन की कोशिश रहेगी। दोनों की ओर से इशारा आता हुआ कि रुक जाओ, मगर मन ही मन कहते हुए एक दूसरे को रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। बैकफील्ड पर खेल दिया इस बार, कट कर दिया है। गेंद फिर से एक बार तेजी से निकलती हुई गली की दिशा में, 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। बिल्कुल सुंदर रनिंग का मुजाहरा इन दोनों के बीच, बढ़िया तालमेल, अच्छी साझेदारी, अच्छी रनिंग, अच्छे शॉट्स खेले जा रहे हैं बल्लेबाजों की ओर से। बिल्कुल एक दर्शनीय नज़ारा देखने को मिलता हुआ, और क्या ही साझेदारी। मेटाफर्न चार्जर्स हाउस ऑफ फर्नीचर्स की बल्लेबाजी बिल्कुल कमाल की। कप्तान और साहिल ने अच्छी शुरुआत दी।
तो वही कॉन्फिडेंस नजर आता हुआ सैम कुरन यानी कि उन्मेष खेड़ेकर के बल्लेबाजी में भी। और देखिए क्या इत्तेफाक है, सैम कुरन उन्मेष खेड़ेकर को कहा जाता है, वे भी 23 ईयर्स ओल्ड और उन्मेष भी 23 ईयर्स ओल्ड, 1998 में पैदा हुए। दोनों ही लाजवाब खिलाड़ी, एक इंग्लैंड से, दूसरा हमारे गोवा से। बैकफुट पर कस फिर से एक बार कट कर दिया है, बिल्कुल स्क्वायर कट जिसे कहते हैं। सीधे खिलाड़ी को पाया डीप पॉइंट की दिशा में, 1 रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी और इस 1 रन के साथ धीमी गति से अब स्कोर बढ़ता हुआ 70 रनों पर। लगभग आधा सफर पार कर चुकी है टीम और अभी भी आधा सफर उनके सामने मौजूद, मगर जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है निश्चित तौर पर यही लग रहा है कि मेटाफर्न चार्जर्स आज मन बनाकर आए हैं कि जीत के ही जाएंगे वरना घर नहीं जाएंगे, होटल में रुक जाएंगे और पूरा खर्च सुनील राठौड़ साहब उठाएंगे। बैकफुट पर इस बार हेलीकॉप्टर शॉट घूमता हुआ। जरूरी नहीं कि सीधे हाथ का बल्लेबाज ही MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयोग कर सकता है, ये लाइसेंस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए भी है। तो तभी तो साहिल गाउंस बिना कोई हिचकिचाहट के हेलीकॉप्टर शॉट की कोशिश की। दोनों की कोशिश इस बार दौड़ पड़े हैं, बिल्कुल भाग मिलका भाग, एक दूसरे से कहते हुए। इन दो रनों के साथ 8 ओवरों की समाप्ति, 74 रन, 74, 1 विकेट के नुकसान पर। बदलाव ओवर में और बदलाव कमेंट्री बॉक्स में भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे सहयोगी जो कि उत्तर प्रदेश से वाराणसी से आए हैं, चंदन सिंह साहब को। सिंह इज किंग। तो धन्यवाद नदीम अहमद जी, जो कि अनुभवी अंग्रेजी कमेंटेटर हैं। इसी बीच 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर 74 रन। पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत और अंपायर का इशारा डेड बॉल का आता हुआ। बॉलर चले सामने बल्लेबाज के लिए और धीरे से खेला, पुश किया, हालांकि वहां पे फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच एक यहां पे रन और जुड़ता हुआ बढ़िया मुकाबला यहां पे चलता हुआ और मेटाफर्न चार्जर्स बनाम यूनियन स्पोर्ट्स क्लब के बीच। मेटाफर्न ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय यूनियन स्पोर्ट्स क्लब को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। निर्धारित 20 ओवर में 131 रन, 7 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद जीतने के लिए 120 गेंदों में 132 रनों की जरूरत। इसी बीच और बहुत ही बॉलर चले अपने ओवर की अगली लेकर, बहुत ही सुंदर गेंद और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। तो जीतने के लिए 120 गेंदों में 132 रनों की जरूरत। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले और सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं, बाकी का काम खुद गेंदबाज ने पूरा किया। इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 120 गेंदों में 132 रनों की जरूरत। बहुत ही बढ़िया मुकाबला
इसी बीच पवेलियन एंड से गेंदबाज चले और हालांकि अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। इसी एक रन के मदद से स्कोर जा पहुंचा 76 रन। सामने है बल्लेबाज उन्मेष, और बहुत ही बढ़िया वैसे ही करारा शॉट खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को रोकेंगे, उठाएंगे, थ्रो करेंगे। फिर से मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन यहां पे लेने का। बढ़िया टच में बल्लेबाजी करते हुए उन्मेष बिल्कुल शिखर धवन की तरह। गेंदबाज चले और बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट, बिल्कुल गेंद की लाइन में आए और बहुत ही सुंदर अंदाज में गेंद को खेला। गेंद गई सीधे फील्डर के हाथों में और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 78 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद मेटाफर्न चार्जर्स। एक बार फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी परेश के कंधों पर, स्पिन आक्रमण लाया गया है और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और ऑफ स्टंप पे जाके जगह बनाया और गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद हैं और इसी बीच एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ। गुलाब ऐसे ही नहीं गुलाब होता, ये अदा कांटों में पलने के बाद आती है। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और एक बार फिर से इसी बीच बल्लेबाज के लिए बहुत ही सूझबूझ के साथ खेला। गेंद गई सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं, और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बगल में पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। हालांकि यहां पे करीबी मामला हो सकता है और यहां पे एक विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में होकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज। तो बहुत ही बड़ा यहां पे यूनियन स्पोर्ट्स क्लब को विकेट मिलता हुआ। आउट होने वाले बल्लेबाज उन्मेष, जो कि रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। दिक्कत बस इतनी थी कि उन्हें निकाह करना था और मुझे शादी, तो ये रन पूरा करने के चक्कर में हालांकि बढ़िया दौड़, लेकिन मंजिल से दूर रह गए और नतीजा रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज। तो जब आप चौके छक्के क्लीन बोल्ड या एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन रन आउट होने के बाद बहुत ही निराशा महसूस करते हैं बल्लेबाज। इसी बीच कल तक दर दर फिरने वाले घर के अंदर बैठे हैं और बेचारे घर के मालिक दरवाजे पर बैठे हैं। खुल जा सिम सिम याद है किसको, कौन कहे और कौन सुने, गूंगे बाहर चीख रहे हैं और बहरे अंदर बैठे हैं। तो यहां पे रन आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं उन्मेष, और उनका स्थान लेने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज।
नए बल्लेबाज गए हैं सरवन्ना, उन्मेष रन आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और मेटाफन चार्जर्स को लगने वाला दूसरा झटका। अपने साथी बल्लेबाज से कुछ गुप्तगू मंत्रणा करते हुए अब अपने अपने क्रीज में नजर हटी, दुर्घटना घटी और रन आउट होकर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। इसी बीच गेंदबाज छोटे छोटे कदमों के साथ स्पिन, यहां पे आक्रमण चलता हुआ और अब चले, बहुत ही बढ़िया गेंद और गेंद को वहीं पे दबा दिया, कोई रन नहीं। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि बड़े होते ही जिंदगी मजेदार हो जाएगी। इसी बीच और यहां पे पूरी तरीके से बीट, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और विकेट कीपर हालांकि चुस्त और एक और यहां पे झटका लगता हुआ। बल्लेबाज आगे क्रीज के आगे होकर पुश करना चाहते थे और गेंद घूमी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और वहां पे गिल्लियां उड़ा दी। तो बहुत ही सुंदर विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का नजारा यहां पे देखने को मिलता हुआ और मेटाफन चार्जर्स को लगने वाला तीसरा झटका। तो स्कोर है 79 रन, 27 गेंद पे 31 रन बनाकर आउट हुए अभी साहिल और साहिल के आउट होने के बाद मंगेश बहुत ही बढ़िया पारी खेल करके अभी अभी पवेलियन लौटे हैं साहिल। तो मेटाफन चार्जर्स को लगने वाला तीसरा झटका, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहां पे परेश के द्वारा और उतने ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। और यहां से एक लंबी साझेदारी की जरूरत, क्योंकि जब साझेदारी बनेगी तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और यहां पे बिल्कुल अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पे ध्यान देके बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और आपको याद होगा जब अर्जुन धनुष चलाते थे तो बिल्कुल मछली की जो आंख होती है बिल्कुल अपने टारगेट पे ध्यान रख के बाण चलाते थे, उसी तरह से बिल्कुल दिमाग में कैलकुलेटर की तरह फिट करके एक एक रन को लेकर के विजय लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना होगा मेटाफन चार्जर्स को। बहुत ही सुंदर मुकाबला और बढ़िया गेंदबाजी, एक स्लिप के साथ गेंदबाज चले और बहुत ही बढ़िया। अब की बार हालांकि फ्लाइट देना चाहते थे गेंद में और फुल टॉस हुई, गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ। तो पहली स्लिप पे है अब्दुल और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 10 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 80 रन।
पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे फेलिक्स। एक छोर बिल्कुल संभाल के रखा है इन्होंने और सामने है बल्लेबाज मंगेश। इसी बीच बढ़िया शॉट सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। और बढ़िया गेंदबाजी पवेलियन एंड से फेलिक्स के द्वारा। बल्लेबाज तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद और फिर से हल्के हाथों से खेला, गेंद गई सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। सुना है बड़े गौर से देखते हैं वो तस्वीर, हमारी शायद उसमें जान डालने का इरादा है उनका। इसी बीच एक बार फिर से और बढ़िया गेंद, फिर से जगह बना के खेला, हालांकि फील्डर मौजूद हैं, कोई रन नहीं। तो गेंद और बल्ले के बीच कसमकस यहां पे देखने को मिलता हुआ। और अब की बार धीरे से खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर गेंद को उठाते थ्रो करते, फिर से दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए यहां पे अपना छोर बदला। अब सामने है बल्लेबाज सरवन्ना। बॉलर चले और यहां पे काटन बोल्ड, धीरे से खेला और गेंद चली गई खुद गेंदबाज के हाथों में। तो एक और बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ सरवन्ना आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, बहुत ही बड़ा यहां पे विकेट फेलिक्स निकालते हुए अपनी टीम के लिए। तो मेटाफर्न चार्जर्स को लगने वाला चौथा झटका। अब नए बल्लेबाज गए हैं डिमेलो सरवन्ना के आउट होने के बाद, और फेलिक्स बढ़िया गेंदबाजी उनके लिए कहना चाहूंगा कि जरा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, इतनी सी बात पर हकीकतें रूठ जाती हैं मुझसे। तो बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, जब मौका मिलता है बल्लेबाजी करने के लिए तो आला किस्म की बल्लेबाजी करते हैं फेलिक्स। अभी मौका गेंदबाजी का, बिल्कुल बांध के रखा है यहां पे बल्लेबाज को, और फिरकी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। 81 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। बल्लेबाज अब तैयार, हालांकि फील्ड का मुआयना करते हुए। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी यहां पे बल्लेबाजों को। इसी बीच और धीरे से खेला, फिर से गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति।
11 ओवर की समाप्ति, स्कोर 82 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद मेटाफर्न चार्जर्स। तो 11 ओवर की समाप्ति, 12वां ओवर गेंदबाजी करेंगे परेश, सामने है बल्लेबाज डिमेलो। चले और बढ़िया गेंद, स्ट्रोक के लिए जगह बनाया, धीरे से खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा और दोनों ही बल्लेबाजों ने इसी बीच अपना छोर बदला। छोटा सा फसाना, किसे क्या बताना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। इसी बीच एक स्लीप के साथ और धीरे से खेला, एक और यहां पे रन मिलता हुआ तो स्कोर जा पहुंचा 84 रन। सीख रहा हूं धीरे धीरे इस दुनिया के रस्में रिवाज, जिससे मतलब निकल जाए उसको मत रखो अपने पास। इसी बीच एक स्लीप के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज परेश, फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन, और बॉलर चले, हल्के से खेला, गेंद गई पॉइंट के क्षेत्र में और फिर से इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, एक रन के मदद से जा पहुंचा 85 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। चले और बढ़िया गेंद, फील्डर मौजूद, सीधे फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद, कवर से भी फील्डर मौजूद। इसी बीच और फुल टॉस बना के खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद हैं, एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ तो मेटाफर्न चार्जर्स को निर्धारित 20 ओवर में 132 रनों की जरूरत। इसी बीच बॉलर चले और सुंदर तरीके से प्लेस किया, कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। तो 12 ओवर की समाप्ति, स्कोर 86 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद मेटाफर्न चार्जर्स। एक बार फिर से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे फेलिक्स और स्ट्राइक पे हैं मंगेश। और बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद हैं, कोई रन नहीं, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी पवेलियन एंड से फेलिक्स के द्वारा।
इसी बीच और बढ़िया गेंद कट किया, गेंद गई गली के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा, बिल्कुल सही फील्ड की जमावट। इसी बीच एक बार फिर से धीरे से खेला और फील्डर मौजूद है, हाँ ना, हालांकि यहां पे मिस फील्ड। इसी बीच एक और यहां पे रन जुड़ता हुआ, तो बिल्कुल छाते की तिल्लियों की तरह फील्ड को सजा के रखा है यहां पे गेंदबाज फेलिक्स ने, और यहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। और सामने बल्लेबाज तैयार और धीरे से खेला, हालांकि फील्डर मौजूद। एक और रन यहां पे जुड़ता हुआ, स्कोर 88 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरे, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और अब की बार हालांकि लेग स्टंप पे थी, गेंद को देखना है बल्ले से है या फिर बल्ले से, गेंद को मोड़ दिया और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया यहां पे स्ट्रोक, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, बिल्कुल कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद को निकाल दिया, गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी का नजारा यहां पे बल्लेबाज द्वारा। इसी बीच और फुल टॉस बना के खड़का दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं। और इसी बीच मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का, और यहां पे 2 रन पूरा होता हुआ भी और ओवर की समाप्ति। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 94 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद मेटाफर्न चार्जर्स। गेंदबाजी करेंगे सरफराज और सामने है बल्लेबाज डिमेलो। तो जो रनों की गति है उसे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा तले पर कहीं डूब न जाए। तो जो रनों की रिक्वायर्ड रन रेट है, बिल्कुल ध्यान देते हुए बल्लेबाज, उसे मेंटेन करके चलते हुए दोनों बल्लेबाज। इसी बीच अब बल्लेबाज तैयार, सरफराज जो कि बहुत ही घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और हल्के हाथों से खेला, गेंद गई गली के क्षेत्र में। बहुत ही सुंदर थ्रो वहां पे अब्दुल के द्वारा, लेकिन बिल्कुल चीते की रफ्तार से यहां पे दौड़ते हुए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। और कदर इंसान की मौजूदगी में होती है, बाद में जो होता है उसे पछतावा कहते हैं। तो पता है बल्लेबाज को कि देर ना हो जाए कहीं। इसी बीच ओहो बढ़िया गेंद, और फिर से गली के क्षेत्र में खेला, फील्डर मौजूद हैं अब्दुल। बहुत ही सुंदर फील्डिंग का नजारा यहां पे अब्दुल के द्वारा, बिल्कुल मोहम्मद कैफ की तरह फील्डिंग करते हैं, चुस्त दुरुस्त। इसी बीच और बढ़िया गेंद धीरे से खेला, हालांकि फील्डर मौजूद है, और अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो बात कुछ और होती, हालांकि
गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पे फील्डर मौजूद हैं। जब तक थ्रो आता फिर से मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास। इसी बीच 2 रन यहां पे पूरा करते हुए जब विश्वास टूट जाता है तब इसी बीच बढ़िया गेंद और कट कर दिया, हालांकि फील्डर मौजूद हैं। डायरेक्ट फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं, विश्वास टूट जाता है तब माफी का भी कोई मतलब नहीं होता। तो वहां पे डायरेक्ट थ्रो लगा था, पिछली गेंद पे थ्रो किया था, गेंद लगी नहीं, गई बाउंड्री लाइन के पास, तब तक मौका था 2 रन लेने का। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद और बढ़िया उठा के मारना चाहते थे, हालांकि फील्डर चौकन्ने, कोई रन नहीं। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पे सरफराज के द्वारा, बहुत ही सटीक लाइन पे गेंदबाजी करते हैं सरफराज। जब शुरू में डेब्यू किया था हार्दिक पांड्या ने तो बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी, और अब की बार फुल टॉस हो गई और बढ़िया शॉट खेला, हालांकि बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। कसी हुई गेंदबाजी और ओवर की समाप्ति, सरफराज के ओवर की समाप्ति और 14 ओवर की समाप्ति। स्कोर 98 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद मेटाफर्न चार्जर्स। तो 14 ओवर की समाप्ति, स्कोर 98 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। और पवेलियन नेट से गेंदबाजी करेंगे अब्दुल। राइट हैंड ओवर द विकेट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंद आप स्टंप के बगल से निकल गई। बल्लेबाज कट करना चाहते थे, नीचे रहती हुई गेंद, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बहुत ही बढ़िया लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अब्दुल। और अब्दुल के बारे में चले, इसी बीच हाथ खोलने का मौका, बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद हैं और 1 ही रन से यहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। तो पिछले मैच में बहुत ही घातक गेंदबाजी अब्दुल के द्वारा की गई थी। एक बार फिर से पवेलियन एंड से चले, सामने बल्लेबाज के लिए और खड़का दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और बहुत ही सुंदर फील्डिंग का नजारा। इसी बीच एक और यहां पे महत्वपूर्ण रन जुड़ता हुआ, इसी एक महत्वपूर्ण रन के मदद से मेटाफर्न चार्जर्स का 100 रन पूरा होता हुआ, 100 रन पूरा होता हुआ। अब जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। इसी बीच अब्दुल चले, और बढ़िया गेंद उठा के मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बिल्कुल अब्दुल बढ़िया गेंदबाजी करते हुए उमेश यादव की तरह सीटी बजाती हुई गेंद निकल जाती है विकेट कीपर के दस्तानों में, वो ताकत, वो स्पेस। इसी बीच अब्दुल और अब की बार शॉर्ट पिच और सीधे फील्डर के हाथ में दे मारा और एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो
पांचवा झटका यहां पे लगता हुआ और बहुत ही बड़ा विकेट यहां पे निकाल के देते हुए अब्दुल अपनी टीम के लिए। तो मेटाफर्न चार्जर्स को लगने वाला पांचवा झटका, आउट होने वाले बल्लेबाज मंगेश आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। इस ओवर के भी एक गेंद बाकी है। नए बल्लेबाज गए हैं लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशलिस्ट लक्ष्मण, और इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बिल्कुल सूझबूझ के साथ खेलें और जो लक्ष्य है उसे भेद करके वापस आए, जीत अर्जित करके अपने टीम के लिए वापस आए। मेटाफर्न चार्जर्स को इनकी बहुत ही जरूरत कि ये विजय लक्ष्य को हासिल करके आए, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। लंबे कद के खिलाड़ी हैं यूसुफ पठान की तरह, और उसी तरह के पावरफुल शॉट के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच एक बार फिर से अब्दुल, और बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्के से खेला, पॉइंट के क्षेत्र में, गली के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं, कोई रन नहीं। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी अब्दुल के द्वारा, और ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 100 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद मेटाफर्न चार्जर्स। ओवर की समाप्ति, 16 ओवर लेके आएंगे सरफराज, सामने बल्लेबाज तैयार, और बढ़िया नीची रहती हुई गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। हालांकि कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से चुके यहां पे बल्लेबाज, और आपको आगे का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में सुनाएंगे नदीम अहमद। वेलकम। इसी बीच बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर दौड़ रहे हैं, और हालांकि पूरा प्रयास लेकिन नाकामयाब, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, हालांकि फील्डर काफी मशक्कत के बाद भी गेंद को नहीं रोक पाए, और गेंद चकमा देकर निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी चौके की मदद से जा पहुंचा स्कोर 104 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद मेटाफर्न चार्जर्स। नदीम अहमद जी इस ओवर के बाद आपको अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे। इसी बीच गेंदबाज सरफराज तैयार, और बढ़िया गेंद, दिशा दिखा दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और जब तक थ्रो आता फिर से दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे 2 रन अपनी टीम के लिए जोड़ते हुए मंजिल धीरे धीरे अब नजदीक नजर आती हुई। इसी बीच गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज भी तैयार, बहुत ही बढ़िया शॉट, फिर से खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हालांकि फील्डर भी दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही
समझदारी के साथ खेला गया ये स्ट्रोक, इसी चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 110 रन। न मिल रहे हैं, न मिल रहे हो मुझे, न खो रहे हो तुम, दिन ब दिन बेहद दिलचस्प हो रहे हो तुम। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बिल्कुल जैसी गेंदें वैसी नसीहत और उपयोगी चौका यहां पे लगता हुआ। अंत भला तो सब भला। इसी बीच एक बार फिर से और बढ़िया गेंद, धीरे से खेला, हालांकि फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। समझदारी भरी हुई बल्लेबाजी और अंत भला तो सब भला। आखिरी में अगर सब कुछ अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो। इसी बीच बॉलर चले और फिर से फील्डर मौजूद हैं, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, तो 16 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 110 रन। 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद मेटाफर्न चार्जर्स। और आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे नदीम अहमद। धन्यवाद चंदन। 24 balls and 22 runs. Abdul Salam has been given the ball to bowl. Very first ball is a dot ball to begin with. Once again, a warm welcome to all the listeners on the YouTube, and also I would like to say welcome David from UK. Nice to meet you after a long time. You just brushed my memories. A good friend of Vinod Wilson. A lovely a drive straight to the point. Fielder, there is a protection, no chance of a run there. So almost now the situation is run a ball situation for both the teams. 132 is the target to be chased by METAFURN Charges. And the team owner is here of METAFURN Charges, with a lot of hope and enthusiasm that the team METAFURN Charges is going to win today. A little bit of inside edge, and the ball has gone straight to the short gully region. A lot of wickets have fallen in a simple manner. It was not needed in the wicket of Sarvanda. He played straight back to the bowler, giving himself a simple catch. And that is exactly how the wickets keep falling. Unmesh Khedekar, Sarvanda, and later on Mangesh. And the captain himself could not steady on the wicket. The vice captain, the captain is of course Sunil Rathod, who gave a good start to the team. He could have played more better shots to stay there for some time. As initially what we saw, he was surviving dangerously, but after that he played a really sensible inning alongside Sahil Gauns, who contributed a handful, 31 runs in just 27 deliveries, whereas Sunil Rathod scored 23 runs in 18 deliveries. They laid the foundation for a good total. Nicely done, just cut away, square cut, but straight to the fielder. A good effort there, that's just the hand to it. And conceded just one single run to take the score up to 102. 112, I beg your pardon. 112. Just past the Nelson figure. Run the ball situation. Now the ball is up in the air and straight to the field. Another wicket here bites the dust.
Run a ball is the situation, and what was the need for playing in the aerial and playing straight to the fielder though? Just throwing their wicket carelessly. The batters Lakshman. It is a good opportunity still. There is a bright chance for METAFURN Chargers to make a win and get some 2 points in the ratings. It's once again a quick reminder that every match there are 3 gifts to be given away. 1 gift voucher as dynamic player of the match, maximum 6s, and man of the match. Every time coming up with different surprises. Pritesh Naik just trying to give what best he can give to the tournament. Hats off to his good thinking and good improvisation every year, making this tournament grow just better and better. Way outside, that should be a wide, and well done by Dipesh. Just try to keep the ball under his control and not allowing the ball to just go past, resulting in another run coming from the running between the wickets after that wide. 113 with the help of this extra from Abdul Salam over the wicket to Shekhar Bethodkar and Alistair De Mello. Completion of 17 overs, 113 runs for the loss of 6 wickets. "18 balls, 19 runs" is the equation, almost a run a ball situation here. Every ball, a single, also will serve the purpose. They don't have to self-destroy themselves. The METAFURN Chargers batters, they need to show some skills, and at least a simple batting also can take them to the a target of 132 to win, whereas now 19 runs needed. Shubham Gupta from the far end has brought into the bowling proceedings to begin the 18th over. Alistair De Mello on striking position, and Shekhar Bethodkar on the non-strike end. 7th and 8th batsmen for METAFURN Chargers. After that, a good start from the captain Sunil Rathod and Brian Lal of the team. Sahil Gowns giving a good start, with Sahil Gowns contributing 31 runs in 27 deliveries, and 23 runs is the contribution from the captain in 18 deliveries. That how good they started off. It was absolutely looking like a one-sided match, but the things started to go bad as the wickets kept falling one after another in a regular succession. Shubham Gupta
Trying to bowl right in the block hole, but played on the lower full toss, but played in the cover straight to the fielder. Alistair De Mello. 17 balls, 19 runs. Now the match is ball by ball. Dot ball will be pressure on the batters. Every good shot will be pressure on the fielding team. Watchfully played this time. Once again, waiting is the call from Alistair De Mello. 16 balls, 19 runs. Things are getting intense now, as the jury is making preparation for the presentation. Pritesh Naik, Siddharth Naik, Sajjan Naik, Afridi Naik. Right in the block hole. Look at that delivery, but dig it out. Look at how beautifully that Alistair De Mello has dug it out. Right, the depth was intense. Two runs straight away. 15-17. 15 balls, 17 runs. Bowled him. The inside edge of the bat takes the ball straight right onto the stumps. Alistair De Mello is bowled. The 7th wicket goes down on a total of 115. Most 17 runs needed in 14 deliveries now. What a good spell from Shubham Gupta. Shekhar. Chaitanya Mardolkar is a new batsman walking in. A lot depends on him now how to bail the team out of the crisis, as the team is now sailing the troubled waters to get to the target. It looks like now 132 is like scaling the Mount Everest in the difficult situation. Such is the condition now of METAFURN Charges, the house of furnitures. Chaitanya Mardolkar is the hope for METAFURN Charges, and Shekhar Bethodkar. Again, these two drivers take the ship of METAFURN Charges, sailing from the troubled waters to the shore. Oh, what a match this is turning out to be. Absolutely a cracker of a contest. What a fight back from team Union Sports Club under the captainship of Mohit Tari, who did a good batting though, but on the fielding he had two fumbles and the ball just rolled over to the fence. Some ups and downs in the situation of the match, but who's going to go home happy winning is still a big question mark, as the match hangs in balance. It could be anybody's game. 14 balls, 17 runs is the equation. Taking some time, but the officials are keeping their eyes on the watch. Chetan Mardolkar. Good drive when he covers. Excellent piece of fielding there from Sarfaraz Nawaz. 13 balls, 16 runs. Last delivery of the 18th over from Shubham Gupta. 16 runs away from the target of 132.
As the score is 116 on the board. Once again bringing slightly a bit of a change the fielding in the deep third main region. Swing and a miss. End of 18 overs. Now the equation will be 12 balls, 16 runs. As the official umpire says, over. Welcome back in what an intense situation here. 12 balls and 16 runs. The captain himself, Mohit Tari, into the bowling proceedings to begin the 19th over. On strike is Chaitanya Mardolkar. You call him Chetu Mardolkar, you call him Chaitan Mardolkar, you call him Chaitanya Mardolkar. A lot of hopes on Mardolkar to bail the team out of the crisis. Captain to Mardolkar. Swing and a miss. Pressure is growing. 11 balls, 16 runs. 11-16. One good hit is what is expected from the batters, from the team dugout, as the team owner is also here with taking care of the team, bringing a lot of refreshing juice to them. Have the juice, but make sure you win the match for me. Good looking drive in the covers, a slight fumble there, a single comfortable. 10-15. What a pressure. You know, Siddharth Naik is roaming here and there. Though he's not part of any team, but he's part of the organizing committee though. He can feel the pressure. Prashant Gadekar is taking some time. He's not as quick as Santosh Goenka. Oh, lofted shot, the ball is up and will go out of the park for sure. And yes, it is. What a lovely time shot from who else than Shekhar Bethodkar. Wonderful shot, and the ball coming right out from the middle of the bat and going the distance, and a much needed big shot from the batters is finally been shown by Shekhar Bethodkar. Now it's 9 balls, 9 runs. Once again, run ball situation. Look at that, one good shot, what the difference it can do in the equation. What a match, oh boy. My goodness. Once again, lovely shot, but there's a fielder. Oh, the ball has gone past the fielder. Could be a couple of runs or maybe a boundary. No, there'll be 2.
Slight fumble from the fielder as well. Look at the pressure, what it can do. Fumbles. That should have been stopped, says Mohitari. A couple of runs here to take the score to 125. 7 runs needed in 8 balls. 8 balls, 7 runs. All after Chaudhary Sarfraz. Nawaz, will he take that catch? A simple catch. What a good adjustment. Shekhar Bethodkar is unhappy. Seven balls, 7 runs. 8 wickets down. Vikesh joins in. Now the bowlers, the tail-enders. Mohitari with 1 wicket. Good catch by Sarfraz Nawaz. 7 balls, 7 runs. The batsman still had an advantage in this match. Is 1 or 2 good shots, it will be the end of the match. Good looking drive set to the field. A chance of a run out here. No, the throw is slightly wideish. A comfortable single in the end. Last over and 6 runs needed. As the official umpire says, over. Look at the intense situation of this match. The score is just 132 at the rate of 6.6 was the requirement for METAFURN charges, with a good start though from captain Sunil Rathod and Brian Lara, Sahil Gowns. What if the score had to be 150 plus or beyond that, 160, 170? As the team need to really improvise on the batting skills. As this tournament has some good teams which can even score 175 to 180 runs easily. And they even have the ability to chase, like Nagesh Youth of Bandura. They chase 172, which has been considered as a mammoth total, with the blistering knock from the captain Sachin Gurpaskar of 69 when he was dropped on 45, and followed by Kedar Naik's sensible inning. Made sure the team reaches the target of 172, and what a comprehensive win for Nagesh Youth of Bandura. As the team, Nagesh Youth of Bandura will be playing again after lunch against Darsakal Stars in the afternoon session. And I'm sure all the players are watching this match. All the best for Nagesh Youth of Bandura as well as Darsakal Stars for their upcoming match, which is the second match of day 4, Royal T20 Championship 2022 Season 6. Felix Dice, the right choice for Union Sports Club Marseille. Good all-rounder. He brought the team to the victory in the very first match with his batting ability. Now, can he bring the team's victory with his bowling ability? We'll have to see. We'll have to wait and watch. 6 ball, 6 runs. Vikesh on strike. A single. 5 balls, 5 runs.
One silly mistake can cause them their match. Doesn't matter it's the bowler or fielders or the batters. But 5 ball 5 runs is quite achievable, but not in the tense situations like this when the team has lost already 8 wickets. Chaitanya Madolkar. Oh, the ball hitting on the Kamaria. One silly mistake from Felix. The ball is gone. Once again, look at the fumble there from the fielder. 2 runs, easy picking up. 4 balls, 3 runs. Leg by signaled. Four ball, 3 runs. It wasn't needed for Felix to throw that ball to make him run out. Look at the truck speeding up. He's in a hurry to reach. Or maybe he's racing. Four balls, 3 runs. Chaitanya Madolkar is looking confident with that driver, which gave him 2 runs. Of course, one came in the form of overthrow. A bit of bat on that. A single will be comfortable here. Good effort from Felix Dice. He lost his control on the footing, but still wanted to throw that ball on the stumps, but missed it. 3 ball, 2 runs. In 3 balls, just 2 runs needed. Oh, I can put it this way. 2 runs needed in just 3 balls. What a close match this is. Absolutely. Nail-biting finish. As our Siddharth Naik is biting his nail to see which team is winning. As his duty bond. Two balls, 1 run. As Siddharth Naik is duty bound to take the trophies down. Every match. 2 ball, just 1 run. It will be a wonderful and a very sweet victory for METAFURN Chargers. The score is level. Or will it go for the super over? Another 15 to 20 minutes if it is super over. As for the officials, the lunch is waiting. Congrats! No ways! No ways! I just wanted to say congratulations, but for which team? 1 ball, 1 run. It looks like all chances were super over. And the public is demanding, yes, we want super over. But not Prashant Gadekar. He wants to rush back to the hotel and come back for the next match. What a good fielding in the forward shot square leg. The forward square leg. Look at all the fielders are closing in. Chaitanya Madolkar, will he be the hero of this match? Dynamic player. Oh, what a catch! This is absolutely wonderful, and the team has been. The match is draw. It's a super over. It looks like Prashant Gadegi is asking the question, why super over? We can finish it off with the toss. Wonderful catch. This is the fighting spirit of Union Sports Club of Marseille. They will just not give up.
Sarfaraz Nawaz diving and taking the catch. It's 1-1 point. Still he's asking us to wait. Yes. In the league matches it is 1-1 point, but still we'll have to wait. Pritesh, come upstairs. So super over. Finally the match has gone to the super over. So requesting team Union Sports Club to please decorate the field fast. The officials take your positions and the batters please come down. Super over, first time in Royal T20 season 6. Siddharth Naik is taking the trophy as well as the watches down as he is duty bound. A lot of money in the bag as well. Indian currency. He's saying euro, but he's the real hero. All the best for both the team once again. It's a new match. Super over. 1 over will decide the fate of the match. Which team is going to win the 2 points? Union Sports Club Marseille or METAFURN Charges, the House of Furnitures. It was an easy target in 2 balls, just 1 run.
The second last ball was fielded. The last ball was taken a catch brilliantly by Sarfaraz Nawaz. Such is a team of Union Sports Club. Look at the unity from Union. Pepsi Circle. Ye dil mange more. They say they want more points. They've already won one match with 2 points on the score table. With this win, if they are winning, then they will get more 2 points to make it 4. Or you never know, because the METAFURN charges are looking charged up today. Sahil and Sarvanna, the S factor for METAFURN charges. Sahil Gowans and Sarvanna, both outstations for METAFURN charges. One is left-hander, another one is right-handed. One with blistering inning of 31 runs in 27 deliveries, that is Sahil. And Sarvanna in this match, in the last match, could only score 0. Well, can he be the hero? It's only the difference of Z and H. And Sarvanna just have to now replace that Z with H to be the hero. Yes, we are ready, sir. Sahil counts. Abdul Salam has been trusted with that super over from the far end. The 360-degree player who's not only good and capable of doing a good batting, but is a class act when it comes to bowling as well. Are you ready for the super over in the season 6 of Royal T20 Championship 2022? Dipesh Naik is the fielding captain. Oh, lovely drive, the mid wicket. Fantastic fielding from Sarfaraz Nawaz, wicket keeper side. With that outstanding shot, just 1 run conceded. 1 ball, 1 runs. Sarvanna, sabka Anna. In the cricketing family, Anna means the elder brother. Over the wicket for the right hander. A lot of fielders in the covers. Shot third man. Gully. Deep point. The ball is straight to Sarfaraz. Takes another catch. A lot of catches from Sarfaraz Nawaz. Sarvanna once again could not score on a golden duck. Now 1 more wicket. That will be the last wicket. Score is just 1 on the card. Who it is? Lakshman Gowda. Last wicket, and the target will be very less. Sarvanna is not in a form at all. Because he's got duties day and night. He's a policeman, Sarvanna. Maybe if you don't have to live in the night, then you cannot perform in the daytime. That is where the difficulty is for the policemen, players. Lakshman Gowda. Sarfaraz Nawaz picked up a catch. Abdul Salam is the bowler. Score is 1. The ball is up and there is a fielder. He will not get to it. It's a boundary. Beautiful boundary. Score is 5 quickly in 3 balls. A sign of relief for METAFURN charges.
at least some runs on the board. With the pace of the delivery, nicely done by Lakshman Gowda. Beautifully executed in spite of the fielder there. The ball has just gone past the fielder to the boundary. 3 balls remaining. Score is 5. Last wicket. Even at this point of time, 1 wicket will be a very less score for METAFURN Charges. Swing and a miss. Look at the pace. The ball traveling 135 kilometers an hour. He's really quick between the wickets. Beaten on the pace. The fastest delivery is 161.3. Rawalpindi expects Shoaib Akhtar. The second fastest, Brett Lee, 161.1 kilometers per hour. Slow one, the ball is up in the air. There is a fielder. Will he take that catch? He has taken a wonderful catch. That is 6 runs is the target for Union Sports Club to win this match. Run a ball situation for Union Sports Club to get to the target and win this match, which looks like could be a very less score, but you never know. It all depends on the bowler, how he gets a dot ball and put pressure on the batters. This Super O is going to be very interesting once again. 6 ball, 6 runs is the target. In the meantime, if any team is here, Nageshwar of Bandura, that's called Stars, I would like to request the captain to please, in the meantime, fill up the form for the playing 11 for today's match and be ready for the toss. Today there is no lunch for the officials. They will have to continue. Today let them make some difference. As that is the need of Brian Lara, 18 number jersey. Unmesh Khedekar, Sam Curran, Sunil Rathod, the captain with the fielding arrangement. Alistair Di Mello, he is injured, but still he's walking in. 99 number jersey. Chetan Madolkar.
Well, requesting the batters to please make it fast. Union Sports Club Marseille. It looks like it could be Abdul Salam or Sarfaraz Nawaz, the two outstations. Sam Curran in the deep long leg region. Sam, can you hear me? Yes, he can. Six ball, 6 runs is a target. Chetan Madolkar is still repenting maybe. How could not I score 1 in 2 balls? He's still scratching his head. What an opportunity. Batsmen, please hurry up. There is second match in waiting. The player has to be like soldiers, fast and quick. As if they are going in the war, and the match is not less than a war. सरफराज जरा जल्दी करेंगे प्लीज. So 6 runs needed now in 1 over. Vikesh on the bowling mark. On strike will be Sarfaraz Nawaz, non-strikers end Felix Dice, and all the best for both the teams. The team which will win 2 points. It's a long waiting. The match started sharp at 9:30. It's almost 2 o'clock. The longest T20 in the history of Royal T20 in 6 seasons.
Wanted to scope. 1 run by signaled. 5 balls, 5 runs. Straight down the ground, could be another single. Slight fumble. He's in. Three runs in 2 balls, 4 balls, 3 runs needed. Felix dies with 2 runs. Scoring 3 runs in 2 balls. Now the requirement is 3 runs in 4 balls. Vikesh to Felix dies. Super over in season 6. Good looking drive, long on. No fumble, just 1. 3 balls, 2 runs. 3 balls, 2 runs to win. सरफराज नवाज. सरफराज धोखा नहीं देगा. पीके डायलॉग. And if this super over is tie, it will be toss. But the captains, please make a note of that. No more super overs till evening. Three balls, 2 runs. Sarfaraz on strike. Winning shot, congratulations. Union Sports Club Marseille for a fantastic win. Sarfaraz Nawaz once again becomes the hero. When it was a time to be hero for a Savanna, Sabka Anna. It's time for post-match presentation.